हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कर्जे के ऊपर, जो पाकिस्तान में काफ़ी बहस और गुफ्तगू होती रहती है उसके ऊपर। पिछले चंद महीनों में बल्कि कई लोगों ने ये भी कहा कि टीके लगाए गए हुकूमत को और मुल्क को कि का पहले सूद की जो शरह थी वो बढ़ा दी गई, उसके बाद कर्ज़ों की जो प्रोफाइलिंग की गई उसकी वजह से मुल्क को खसारा और नुकसान हुआ। तो रिसेंटली अरीबा शाहिद ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग पर। तो मैंने सोचा आज उनको दावत दी जाए, उनसे पूछा जाए कि वाकई क्या पाकिस्तान को टीका लगाया गया है आईएमएफ के और ये कर्ज़ों के ज़रिए। तो अरीबा, वेलकम टू पाकिस्तान मी वंस अगेन। हाय। तो टीका मैं नहीं शुरू लगा, इट्स अ वैक्सीनेशन। इट्स अ वैक्सीन, जो आपने ये पहले ही कह दिया, तो लेकिन मैं शुरू इस बात से करता हूँ कि मैं देख रहा था एक प्रोग्राम रिसर्च करने के लिए कि कुछ महीनों पहले से डॉक्टर ज़ुबैर थे, एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने तो टीवी पे आके ये भी कह दिया था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इनके कोई इंडिया से लिंक्स हैं और इन्होंने इट्स द हॉट मनी सेम फ्लोज। डॉक्टर जुबैर जिनकी आपसे मसले होते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरे, ये दूसरे वाले हैं ये पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा और काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो सूद जो था वो 13% पे था और फिर स्टेट बैंक ने ज़्यादा बढ़ा दिया और फिर हॉट मनी फ्लो हुआ और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकों को लॉन्गर टेनर पे कर्जे दे दिए। तो आपने जो आर्टिकल लिखा है उसका बताएं कि व्हाट डिड यू फाइंड इन योर रिसर्च। Okay, so primarily, again, a lot of things, बहुत सारी चीजें जो हमारी इकोनॉमी बहस वगैरह ये सब हो रही होती है, it's based on WhatsApp forward. So a lot of people have been talking about ये जो debt reprofiling हुई और ये WhatsApp forward पे ही ज़्यादा बात होती है। तो उन्होंने ये बोला कि 13.25% या I guess 12% जब इंटरेस्ट रेट था उस वक्त ये reprofiling हुई and this cost the economy money. So again, confusion ke liye I'm not going to blame them because the documents took a lot of time for me to go through as well, and because the government was not really good at the way it communicated the reprofiling. So जो debt management statement है उसके हिसाब से देखा गया कि 70% जो debt reprofile हुआ वो floating debt के हिसाब से. अब this is another confusing thing. उसूली तौर पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, it classifies its debt in terms of permanent debt and floating debt. तो permanent debt के अंदर आपके पास ये आ जाते हैं PID, ठीक है, your पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, और फ्लोटिंग डेट क्या आता है, ये शॉर्ट टर्म डेट एंड दैट इंक्लूड्स योर टी बिल्स वगैरह. लेकिन जो 70% ऑफ द डेट जो reprofile हुआ लॉन्ग टर्म में, that was reprofiled using floating PIDs, which is a type of permanent debt. So this is something that was really confusing for a lot of people, including myself, क्योंकि जब वो मैं floating debt के देख रही हूँ तो वो ये है, लेकिन permanent debt ये है, उसके अंदर floating debt लिखा हुआ नहीं है. What am I supposed to do? So 70% floating. Floating के हिसाब से ये होता है कि as your interest rates rise, the coupon rises, right? And as it goes down, आपके interest rates go down. So you aren't locking yourself into any interest rate. Um, so this is risk free. देखा जाए, essentially it's risk free. जो remaining 30% है, that wasn't very long term. It's relatively short term. And the major part about this is चाहे हुकूमत ये reprofile करे या ना करे, कोई खसारा ऐसे नहीं पड़ रहा directly because ये state bank debt है. So you know how the IMF program says you're not allowed to borrow from the state bank? It's primarily because of the fact that state banks से आप पैसे borrow कर रहे होते हैं. So that's just, you know, creating money out of nowhere. It's like increasing the money supply. तो ये inflationary है. So ये पहले से borrow किया हुआ state bank debt है जो reprofile हुआ है. So at the end of the year, when the state bank calculates its profits वगैरह, तो ये सारा interest income goes back to the government. So it's essentially government ने पैसे state bank को दिए, state bank ने पैसे वापस government को दिए. So this type of reprofiling didn't really cost the economy much, but it had advantages, which is something that I feel that the government did not highlight as much as it should have. So because of the unclear statement by the government, or clearly आके इसके बारे में बात नहीं की गई, because of that a lot of people can come up with conspiracy theories. तो आप टीका बोल दो, आप बॉम्ब बोल दो, आप IMF को बुरा भला बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो उस पर. नहीं, तो उस पे आई एग्री विथ यू कि उन्होंने इसको कम्युनिकेट सही तरह नहीं किया और आम आदमी के लिए, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और सीरियसली लेते हैं, उनके लिए कन्फ्यूजन हुई। लेकिन मुझे तो शॉकिंग बात ये लगी थी कि जब ये डिबेट चल रही थी और अब नहीं हो रही है डिबेट, क्योंकि प्राइमरली क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं,
लेकिन Yeah. आपके एमिनेंट इकोनॉमिस्ट आगे टीवी पर ये बात कह देते थे कि टीके लगाए गए हैं और इसके अंदर Yeah. इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जीआईटी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपने जो रिसर्च किया उससे तो यही, मैंने जो आर्टिकल पढ़ा और कुछ क्लिप्स स्क्रीन के ऊपर लोगों को जो देख रहे हैं उनको भी नज़र आ रही होंगी कि एज़ सच उसका कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। प्राइमरीली जो मुझे एक फ़ायदा Yeah. ये लगा कि Pricing आपने advantage है. प्राइसिंग एडवांटेज है, और दूसरा ये कि आपने उसकी टेन्योर बढ़ा दी कि आप अगर शॉर्ट टर्म Yeah. डेट जो आपने बार-बार रीफाइनेंस करना होता था, उसको आपने अगर लॉन्गर टर्म पे कर दिया, तो आपका जो बार्गेनिंग पावर है एज़ द गवर्नमेंट कंपेयर्ड टू बैंक्स, जो कि एक Yeah. हैंडफुल ऑफ इदारे हैं जो जिससे आप बोरो करते हैं, वो भी कम हो गया है। एम आई राइट इन सेइंग दैट? It is, it is, it is. So I was talking to a lot of people for this article. So one of them is Science Ulfika, and he really nicely explained the fact कि पहले हर थोड़े दिन बाद जब आपकी debt mature हो रही होती थी, the government would go into the market and दोबारा auction करते थे bigger amounts. So when you go for bigger amounts, आपकी you don't have the pricing advantage that you expect the government to have. So as the auction sizes have gone down, I guess like 1/10 of what they were in the past, the government now has better pricing power with regards to the auction. So it's saving on interest payments in a way, देखा जाए. Or not only this, the primary and the deficit as a whole will be हमारा IMF के program के हिसाब से we're going on track with that as well. So you're keeping the IMF happy, and you're also saving money indirectly, which is actually good. If you're saving, any money saved is good. आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग कोड उसके अंदर मुझे ये था डॉक्टर पाशा का, जिन्होंने कहा Yeah. कि प्राइमरी सरप्लस तो आपने कर दिया, बट ये बेसिकली जो आप कर रहे हैं वो एक अकाउंटिंग गिमिक है। तो इसके ऊपर इतनी कोई बहस होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंटरनल अकाउंटिंग इशू है गवर्नमेंट का, जिसने रीफाइनेंस करके डेट को इसी तरह प्राइमरी सरप्लस शो कर दिया, क्योंकि वो मेन कंडीशन थी आईएमएफ की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, इससे पहले या इसके बाद, आप जितने कर्ज़ों के ऊपर सूद दे रहे थे या जितना सूद आपने वापस करना था या कर्ज़े जो वापस करने थे, वो आप उतना ही कर रहे हैं। उस पे कोई एज़ सच मईशत के ऊपर या बजट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसका। Okay, so like you can imagine how non-controversial this was. कि मैं मिफ्ता इस्माइल से बात किया. He is an avid, what do you call it, opposition member, or वो he फॉर्मर couldn't फाइनेंस find मिनिस्टर रह चुके हैं। exactly, and he couldn't find a flaw within it. He said timing का मसला है. तो देखा जाए तो उसूली तौर पे सबसे अच्छा टाइम होता है कि उनके टेन्योर में करते हैं और फिर 5.25 पे 5.75 पे आप फिक्स करते हैं. You wouldn't do floating then you would do fixed, right? But he said there's nothing wrong. I just feel the timing is a little off, but there's nothing wrong. So while Dr. Pasha jo kehte hain, he's right. It's an accounting gimmick, but at the end of the day, it doesn't cost you to do this gimmick. It keeps the IMF happy. What's the harm in doing this? Because this is previously borrowed state bank debt, and as we go forward, just हम आगे आगे जाते जाएंगे, क्योंकि the government is now not borrowing from the state bank. As we go forward, ये जो state bank revenues होंगे, ये हमारी shrink होती जाएंगी. So इस साल हमें अच्छी खासी नजर आई हैं, but as time goes on, these will shrink and they will only be limited to state bank का जो revenue असल होता है. The state bank will not be earning from जो the कि borrow बल्कि lending to the government. ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के हेड में आता है, जो कि हुकूमत ने पिछले 2 सालों में इसकी वजह से काफ़ी खसारे को कंट्रोल में किया है। और काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन था कि ये जब अमाउंट कम होगा तो आपका जो खसारा बढ़ेगा उसको कैसे पूरा करेंगे? तो उन्होंने कहा अब हम प्राइवेटाइज़ करने लगेंगे। तो एक और हेड है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। आई थिंक एक But अनइंटेंडेड at कॉन्सिक्वेंस। least at सॉरी least गो अहेड। इससे ये हो रहा है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकेंगे to an extent. मतलब बिल्कुल। unnecessary inflation जो आपकी इसकी वजह से हो रही थी, क्योंकि borrowing in the state bank is not a good practice. जो हमारे मुल्क की मतलब हमारे हुक्मरान ये आदत छोड़ नहीं रहे थे, which finally the IMF got it done. बिल्कुल। और एक और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस मेरे नज़दीक इसका ये हुआ था कि दिस वाज़ अ गुड स्टेप, ओवरऑल नेट पॉजिटिव स्टेप था। Yeah. लेकिन क्योंकि कम्युनिकेट उसको एक तरह से सही तरह नहीं कर पाए, एक तरह से मीडिया Yeah. का नॉइज़ लेवल वैसे ही रहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इकोनॉमी के ऊपर जो बहस होती है वो वैसे ही बहुत शैलो होती है। तो उनको थोड़ी हिट्स लेनी पड़ी पॉपुलैरिटी के ऊपर कि जी आपने टीके लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। The लेकिन आई funny थिंक thing is, हुँ, financial professionals say, if I when I was writing this and I asked a lot of people, ये reprofile क्यों हुआ, ये क्या हुआ? So
majority of them didn't even know that the 70% of the debt that was reprofiled into floating PIBs. And जिनको ये नहीं पता था जब मैंने बोला floating PIBs में हुआ है, what do you have to say about that? And they were like, floating PIBs होते भी हैं पाकिस्तान में. Oh, they still use them? They use them? इस तरह की reactions थे. So basically, I feel that the state bank's doing a really good job getting its information across. Like, Ministry of Finance is not as good at getting its information across. Documents are like the documents are on the website. They're really long documents, but it doesn't explain things as well as the state bank is doing. Well, I think that's the key takeaway. Communication strategy Ministry of Finance की थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, और दूसरा I think एक लिहाज से Memes मीडिया use की जो करें. मीम्स यूज़ करें या इन्फोग्राफिक्स यूज़ करें. Did you see um, the Bank of Jamaica का वो interest rate and inflation वाली video? नहीं, मैंने वो नहीं देखी. I will आप check it जरा out. इसकी लिंक यहाँ पे डालिएगा. हम्म, They're singing डि, songs about interest rates and inflation. डिस्क्रिप्शन में Please इसका click लिंक on the आपको मिल link. नहीं जाएगा. नहीं. Please click over here. उस पर क्लिक नहीं हो सकता वीडियो पे, बट मैं लिंक नीचे डाल दूंगा. आई थिंक नहीं नहीं वो लग जाता है tag. एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि एक तरह से एटीट्यूड हमारा बन गया कि आप जो भी काम हुकूमत करना चाहती है वो मतलब हम समझते हैं कि उनको करना नहीं आता, या कोई करप्ट मोटिव्स हैं या कुछ Do और you want हैं, to और hear something लेकिन funny? या गो अहेड. When I was writing this, I was like, चलो ये गलती की हुकूमत ने. फिर पता चला वो भी गलती नहीं. I was like, I looked so hard for a flaw in this. Like, I tried so hard to find something wrong with what they're doing. मतलब मैंने इतनी कोशिश की कि ये गलती है. फिर प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं reprofile किया? Like, ठीक है वो भी नहीं कर सकते. तो ये मतलब I tried so hard because you know how our mind goes, like, कोई ना कोई गलती तो की होगी, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, right? The finance ministry must have done something wrong, and it's surprising to see that there's something that they did right. Or maybe you got some lifafe at the end from the PTI. But I Yeah, think yeah. it's a really good ईदी article, very ईदी well आई है मेरे पास. researched. Thank you. ईदी EDI, आई yeah, है मेरे it's पास. you did an excellent job with it. So the link is in the description. अगर लोग पढ़ना चाहते हैं पूरा article पढ़ें. It's a very important read to understand कि For some क्यों reason debt paywall नहीं लगा हुआ अभी तो पढ़ ले. अभी तक नहीं लगा हुआ. अच्छा, clips तो थोड़ी मैंने वीडियो पे लगा दी हैं. तो Ariba, thank you again for joining us. This was Thank great, and you. keep up the excellent work. And again, keep Thank diving you. into these topics that are tricky and people often misunderstand. So until next time, we'll have you soon.